मित्र तुम्ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। मेरा अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरू। नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने तेरा वाहिगुरू।
आज करेगा हादसा बाकी रहे न कोई, वारे सब लगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार, गुरु चढ़ता कर से मगे गुर पार पारनहार। कर से मगे पार तारनहार। बोले तो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ, ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਸਮਾਵਤ ਉਧਾਰ। ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਅਪਾਰ, ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜੀਓ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਨਿਰਾਸ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸਿਰਤ ਜਨਮ ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌਂਡ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਸਾਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਜੈਸੇ ਸਖਤ ਸੂਰ ਬਹੁ ਜਲਤਾ, ਗੁਰ ਸਸ ਦੇਖੈ ਲਹਿ ਜਾਏ ਸਭ ਕਪਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਸਾਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਜੈਸੇ ਸਖਤ ਸੂਰ ਬਹੁ ਜਲਤਾ, ਗੁਰ ਸਸ ਦੇਖੈ ਲਹਿ ਜਾਏ ਸਭ ਕਪਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਧਿਆਏ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਧ ਰਾਖੈ ਸਭ ਠਾਈ, ਹੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹੋ। ਜਾਮੈ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਕੋ ਹਰ ਜਪ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹੋ ਹਰ ਰਤਨਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲੋ ਹਰ ਦਸਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਵੋ, ਹੋ ਉਤਮ ਸੰਤ ਭਇਓ ਬੜ ਬੜਨਾ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਆਪ ਵਧਾਈ, ਉਹ ਘਟੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਘਟਾਈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਿਲ ਤਿਲਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਨ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਨਿਤ ਕਰ ਦੇਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਦਾਨ ਇੱਕ ਦੀਜੈ,
नित बस है हृदय हरि मन चरण। जिसते सुख पावै मन मेरे, तू सदा ध्याए नित कर जुड़ना। जन नानक को हर दान दीजै, नित बस है हृदय हरि मन चरण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कौन वाला चौथा? Remembering the Lord in meditation, you will find bliss and peace forever deep within. And your mind will become tranquil and cool. It is like the harsh sun of Maya with its burning heat. Seeing the moon, the Guru, its heat totally vanishes. O my mind, night and day, meditate and chant the Lord's name. Here and hereafter he shall protect you everywhere. Serve such a God forever. Meditate on the Lord, who takes all treasures, O my mind. As Gurmukh, search for the jewels of the Lord. Those who meditate on the Lord, find the Lord, my Lord and Master. I wash the feet of those slaves of the Lord. One who realizes the word of the Shabbat obtains the sublime essence of the Lord. Such a saint is lofty and sublime, the greatest of the great. The Lord himself magnifies the glory of that humble servant. No one can lessen or decrease that glory, not even today. He shall give you peace, O my mind. Meditate forever and ever, every day on him, with your palms pressed together. Please bless servant Nanak with this one gift, O Lord, that your feet may dwell within my heart forever. Waਹਿਗੁਰੂ ਜੀ I just have a few administration questions to ask. One is, would you guys like longer at 5 o'clock or 7 o'clock? 7? What are our options? 5 or 9? 5 or 9? Those are our options. 5 o'clock or 9 o'clock? 5. Wait, so let's do this. 5 o'clock, let's look around, it might be 5:30, we hit or miss to have it ready at 5. Okay, then what we're gonna do is we're gonna do Simran, I'm gonna finish up there. After that, we're gonna do a 1 hour break. Okay? Then when we get that 1 hour break, right, roughly, then what we're gonna do from there, then we're gonna finish, we're gonna do then Palais again, we're gonna do Lama, and then we're gonna do right? So, and then we'll go through that part of the whole part. I think that's just, then we'll have some options. Is that okay with Sunday? Do we need a tea break? If you ask Indian people, you need a tea break? Yes. You need a tea break? No. Okay. Okay. So let's go ahead. Guru Pyareo said that there is tea ready. And like I said, I'm not, you need to stretch your legs, nothing wrong. We got room today, so nothing wrong with standing up or stretching out or going ahead and making, you can stand and listen to Katha, nothing wrong with that. Okay. Additionally, if you want to, you can go get it. Okay? Someone's listening from the front. Okay. So, let's start with the Simran for 5-10 minutes and then we'll begin the translation. What? Guru, why, 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 Guru, why,
Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Why, Guru, Guru, Why, 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 Why, Guru, 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 Why, 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 Guru, 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 Why, Why. Okay, so the purpose of our life is to be wiser. The reason we're all here is to be wiser, but we have to understand a couple of things. I think, did anyone learn new things at this camp? I hope the one thing you learned is that you can jump and jump and jump, but if anything's done in homemade, you'll lose it all. Nam and homemade don't go together. How do you know you don't have homemade when your TV charge is correct? Right? But it happens oftentimes when people do a lot of marketing. So my lose they get homemade, so they ruin their TV. Then people do say to God, because they say, oh, there's a guy, I saw him at God, then over there, he ended up homemade, then what happens is you do fake and what? He said, I thought this was home. ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਜੀਵ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ तो ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ Technical difficulties, we'll close our eyes, we'll do a little similar. Why, Guru, 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 Why,
Okay, everyone listen up. This might save your life. Important knowledge. The importance of listening. By listening, we get a few things. We get almost everything we want. Most of the times, like when we go ahead and we have fighting in our families, most of the time we have fighting in our families because some of us are not listening. Right? I'll tell you. Sometimes the adults, the parents, they don't listen to the kids. The kids complain and say, oh, you're not listening to the adults. Adults don't listen to kids. Sometimes parents listen too much to the kids, right? Over there, when you're children, you don't know what you don't know, right? But you have to give your discretion. You know, we talked about occurring before listening. Most of the time we use occur, we use words, and we hurt people with our words. The Bible tells us that goes on our leg when we hurt someone. Best way to hurt someone is usually insult their family. Why? Because people don't have control over their family. They have control over themselves. And the reason why it hurts is because you can't control your family. You can only control yourself. Our job is to go beyond occur and start to learn how to listen. When we learn to listen, we learn to listen with love. That's what it's got to be. Love. When you're willing to listen to someone, it means that you're willing to hear them out. Listening is very important. Why? Because the person feels validated. They feel like at least you might not have to agree, but at least they're going to go ahead and take the opportunity to say, listen, at least this person respects me. If you respect someone, you learn how to listen to them, right? For example, we're sharing what's in Satguru to friends. You guys are listening. Why? Because you don't respect me. Who do you respect? Now, when Satguru speaks, we have to learn how to listen. Why is it so important to learn how to listen? First stage is, before we left, we covered this. When we jump for Mantar, who is jumping? Why do we jump? The Sarva Nirva Nirvinkar Samadhi after Yananka, after Ether. Why do we jump? How does Waheguru jump? Where does Waheguru live? He lives in what? Sarva Suru. This is her mandir. He uses the Sukram Sharira, which is Nirvan, to move it around. Who's speaking at that time? Is it Panchguru? No. Is it Man? No. It's Atma. Now the question is whether or not the mind is going to listen. Is the mind going to listen to what the Atma is saying, to what Waheguru is saying? If Waheguru is jumping, right, then what happens? We have to learn how to listen. What's the number one problem? People say, oh, I want to hear now, make now further, we got to have now further. Waheguru doesn't have faith in you yet. Just like you listen to your kids when you have faith in them. If you don't have faith in them, you never listen. Right? Waheguru's got to have faith in you. Now you guys all have knowledge that who is jumping? Waheguru is jumping. But you don't listen to the sound of your own voice. Second thing is, why would he go ahead and make noun further if you can't follow the first circle, which is the remaining sixth law? Why would he go ahead and make noun further so that you can hear his voice? And when you hear his voice and then you remain away from it, at that time you're Bemo. Right? You want to talk about Sunmo and Bemo? When you hear Waheguru's voice, you are called Sunmo. When you get away from it, you're Bemo. So he says, because you don't have the responsibility or the maturity to go ahead and listen. That's why noun is अपना गुरु शिक्षा का विचार अखा दे नाल अपन सूझी बंदी क्योंकि नाम जो सुखम है अपन अखा दे वक्त करते समझा और होड़ से अखरा तो परे जाना अखरा छाड़ देना क्योंकि जड़ी चीज सुनने अखरा दे नहीं आती गुरु कहने को उदाहरण देते जितना होना जिन्हें दुख क्लेश क्यों होते क्योंकि आप सुनते नहीं क्योंकि आप सुनिए तो पौड़ी जाना बच्चे माँ पे नहीं सुनते माँ पे बच्चे नहीं सुनते जे आप परिवार ध्यान चलो मान लिया कि अपने विचार लगे फिर आप बह के दो
5 मिनट होके अपने विचार होके सुन लिया एक दूसरे को, वो ना बड़े मसले हल हो सकते हैं, पर आप सुनते नहीं क्योंकि इस परिवार में सुनते जैसे गुरुद्वारे आते करते आते हैं सुनते इसे क्या की जा रहे हैं तो सुना के नहीं फिर मसलों को भी हल नहीं लगा क्योंकि अपनी बात इस करके हूँ कई प्रमुख क्योंकि बेनती करते गुरु महाराज जी साडा नाम करवा दे महाराज को और महाराज साडे तो प्रेम प्रतीक नहीं आती उनका इधर पहले क्या है गुरुमंत्र भी जपते ना सुनते हैं जब जीवन फिर पिता के नाम पे बोल करेगा वो तो भरोसा ही सारे तो भरोसा जितना करेगा भरोसा के जितना करेगा गुरुमंत्र जप के तो पूरी मंत्र का दल के मन में ठीक करके फिर नाम प्रकट होगा उन कई गुरु का नाम प्रकट है जब हम जाति वाले नाम प्रकट सुनते हैं तो सुनते हैं सब नहीं सुनते देव तो ये बेहतर नहीं कि आप अभ्यास ऐसा कर लिए कि सानू समझ आ जाएगी जो नाम प्रकट है और आपको की आवाज है सुनना देव को नाम होते ये वजह क्या मेहनत कर ली Okay. Here are the benefits of listening. Ravani says, we know Kal is governor of Maya. You have a choice. You can either live in Kal's mouth or you can live in what I just know that is living. Right? Kal can't touch you. You will be in an unknown by listening. Sins will run away. Pain will run away. Foul mouths will praise. So people who are foul mouth, they'll end up by praising as well. You'll learn secret duties for the body. How to go ahead and connect each other, right? You'll learn truth, you'll learn contentment, you'll learn spiritual wisdom, you'll clean your mind. When you read and recite Gurbani, you will get honor. Okay? You will have sage, you will be in dhyan, you will have admirable qualities. I mean, people will look at your gunas and say, those are good gunas. Even if you're blind, by listening, you will find that. What is unreachable for others will be reachable for you. Just by doing the one act of listening. जे ਆਪਾਂ गुरु की बात लेके ਆਪਾਂ अपने आप को क्या भाई रास्ते चल रहा है तो हम बना ही लिए मान के सुनना है सिर्फ एक सुनने के कारण अपन थोड़े थोड़े बारे सारे क्योंकि अपन काम देश रहने या तो काम है अधीन सारी पर सेवा करने का काम नहीं तो ऐसे नाम मिलना क्या हो वायु लिंगी हो तो या हो वायु से करते हैं इंग्लिश में सारा लिखा है जो अपन उसमें पढ़ जाएगा इसमें अपन जो सुन लिए नाम की सारे और तो अपन काल या समझ नहीं सकता जे अपन सुनना शुरू समझ लो तो किस शब्द को करता है आप क्योंकि हुक्म वाले धीरे धीरे एक शब्द है उसके काल में इजाजत नहीं जाती तो जे साढ़े शब्द पर के रोजे में काम होता है हमारे स्टूडेंट को होना चाहिए आगे वाले और दूसरे आनंद ले रहे होंगे क्योंकि नाम ना जुड़े हुए विचार बन गए सारे आप सारे आनंद लेते करते बारे में आनंद सबको है आनंद गुरु पे जाने गुरु दसने का आनंद की है क्योंकि ये तो नाम में प्रकट होता का आनंद है तो ज्यादा से ज्यादा आगे वाले दिन पाप तेरे काट जाएंगे आज ऐसे पढ़िया नाम लेते नहीं रत्ना से ना पाप बुलाए पाप लेते सुनना है पहला पढ़ना है सुनना भी अपना सारे दो पाठ जाएंगे इवन जड़े निंदक ने नास्तिक ने सागर में ने थोड़े जीवन को देख के और बड़ी सुख कभी कह नहीं आता ध्यान जानते दुश्मन ने भी तारीफ की क्यों उनके जीवन ही अलग कैसे तो जड़ी जुक्तियां जड़ी शरीर के सब पता नहीं लगता ये सब सारा भेजना शुरू हो गया सुनना शुरू करता है सच सारे का सच सच्चाई बोलने की आ जाएगी खड़े होने लगे कई बार सारे होते होते आप साथ खड़े ही होते क्योंकि जीवन जा नहीं तो जिस 16 पे रहते पकड़ा के साथ सारे दो बार रहेगा फिर सारे अध्यात्म के ज्ञान आपने करते हैं ना सिद्धाय बना दे फिर साथ जाएगा तो आप सोना शुरू करेंगे सोना शुरू करने के बाद कहते ये सोना मेरा मान को करना सिद्धाय को बैन हुई है और मान जेड़ा है वो तो ये कितना हमारे मन तो वो शब्द लागू तो सोना के मन होता जाएगा सुन जाओगे मन आप साल हो जाता है और जो गुरबाणी पढ़ेंगे जेडे गुरु का नाम ना जुड़े जेडे सहज प्रगट है वो ध्यान रख के गुरबाणी पढ़ते हैं वो मान देता है तो और अंदर सहज जाएगा तो हम पता है ध्यान की वे लगे तो मोस्टली पढ़ी पढ़ते विचार जो नहीं पता नहीं पढ़ी भूल गई कि कितना कितने जब साहब पढ़ते हैं आपको तो कितनी बार होता है पता लगा पांच बड़े कितने 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 घंटे कितने नहीं कोई विचार आ गए तो कहते हैं पूरी बात बारी कितना
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਕੀਤੀ क्यों होगी पढ़ते पढ़ते ओ कितने ध्यान सुने कर लेंगे बड़े जल्दी क्योंकि ध्यान नहीं सी मुझे सुना कर ध्यान नहीं आएगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ऐसे गुण आएंगे कि दूसरे जीव देख के कहने के बहुत गुण है पर आए किस कारण क्योंकि सुनना शुरू करता नाम दे करके ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨਾ ਅੰਧੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਇਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾ ਦਾ खत्म होते जाए जिन्होंने परमात्मा का पता नहीं लगता अंधे वो है शरीर का क्या नहीं क्योंकि मानते तो रहेंगे वो उठा रहेंगे ना आ शरीर का भी लाइए वो कर्म करके सालों तो आप अंधे जरा अन्ना भी होगा उन्हें मार हो जाएगा जब आप सुनना शुरू करिए क्योंकि सुनने से पहले चाहिए थोड़ा शुरू करेगा क्योंकि उसको का कारण देखना और इसको करना तो जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ So, the Ronnie says, who is listening? Okay? It says the siddhas are listening, the spiritual teachers are listening, the heroic warriors, the yogic masters, the earth, the Akash, the sinners, the oceans, the land, the world, the nether regions, Shiva, Brahma, Indra, Shastra, Simrit, the Ved, chakras, religion scholars, spiritual teachers and emperors. Everyone can listen to Nam, but they don't get to the goal. Why not? Because of Home. Brahma knew about Nam. He went ahead and wrote Ved. In Ved, they talk about Nam, they do this with the Nam. But how come Brahma is stuck in all of the cycle of life and death? Because of this. Nam isn't you. God won't take it away once you get it. You learn how to earn it, you'll get it. But the problem is, people get fascinated with what comes after now, what chases after you when you get now. What do you get? You get Ritsid, Nomen. Then what they do is rather than asking for Nam, they say, you know what? I'll take the Ritsid, I'll take the Nomen, I'll take everything else but Nam. This is important because you have to realize when you do Simran, you will get Shakti, you will get things. As soon as you want, as soon as you take it for Nam, you'll get that thing. Want something, you'll get it. The danger is the inside will come outside. It all depends on it. Are you being selfish or selfless? Are you doing it so the person goes forward, or are you doing it so the person goes backwards, or you go ahead and others stay back? You have to learn how to serve. You have to come outside of Home. Just because you're doing bhakti doesn't mean your Home goes away. Your Home goes away when you samao in the Nam. All the thoughts are listening to the Nam. We're going to talk about where the gate is, where the dar is. You have to learn how to samao in the Nam. First is learning about Nam, bringing the mind into Hukam. Second is then you have to learn how to samao in it. Once you samao, then the sipsala is easy. Once you sit inside of such, then the Hukam is easy. Why? Because can you sit inside of such with Home? Then you drop right back down. That's why the Bible tells us where you are, when you are there, or when I'm there and you are not, right? Right? Yeah. when you're there then I'm not there when I'm there then you're not there Right? Because Home separates us. Listen, I have a friend who was a very good woman, a very close friend of mine. One day someone asked him, said, can you go ahead and stop my thoughts just so I know what it's like? I said, okay. He goes, let's do things what I do. We'll stop your thoughts. When he went ahead and he stopped his thoughts, he had so much Shakti, he turned into the whole thing that he goes, ask for whatever you want and I'll do it. Here was a guy just a few minutes earlier begging for his thoughts to stop. Once his thoughts stopped, he turned to someone and said, I'll be the giver. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ
ABC है थेरेपी। ये तो बात सुनना है, सुनने के बाद और अगे जाना है, समाना है इसके क्योंकि होम है हम इतने लिखे कहड़े गए हमारे सोनी ईश्वर वर्मा है ईश्वर वर्मा ये सारे सुनते थे क्योंकि वेद के तो आए नाद और कनेक्शन थी ना ता वेद लिखी पर होम में करके कि मैं लिखे हैं होम में करके सारे दर्द करती थी तो आपका इस मार्ग पे आप लोग कभी होम में नहीं ज्ञान आ गया मैं नाम सुनता और जितना गुरुमुखा ने उदाहरण देते गुरुमुख की बेनती की कि मेरे विचार हो तो मैं देखना चाहता विचार हो भगवान की होता तो गुरुमुखा ने अरदास करते हुए जाता और विचारों के बाद देखा सारे जगह बेटा तो सब कुछ ही जो करूँ देने में दे देगा विचार में होम में की सिद्धि आई क्योंकि मन जो पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं कि होम में तो है तुम्हारी धरती है नाम जपना नाम तक पहुंचना नाम के लिए नींव रहना नींव लगा है नौकर पढ़ के रहना मालक नहीं क्योंकि जो मैं उसे ग्रो नहीं परमात्मा नहीं परमात्मा साड़ी होड़ नहीं है सो इस करके एक और उदाहरण है वो चुप चाक गुरुद्वारे में गुरु मिले वो कहते जी साडे परिवार विच एक हिंदू परिवार भी मुकेश वो कहते साडा ठीक है साडा ठीक है ਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਦ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ और पता ही नहीं कि दोनों में गल एक ही हो रही है ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ ਨੇ तो ये अपनी हालत हो जानी है क्योंकि ज्ञान है क्योंकि हम काल अपना काम करिए ना नाल उन गुरु ने रित सिद्ध की गल भी की थी ऐ अपन हर स्टेप पे देखना पड़ा ऐ लोगों की जगह काल का हृदय से जगह खड़ा है क्योंकि नाम का जावे ना पड़ेगा और कई हम पहुंचते होते कि हृदय से जगह रहती है वो शक्ति है जो सोचते होते हैं फिर क्यों है ये हुक्म दे बेटे नहीं क्योंकि सारा कुछ मान के नौ ने प्रभु का नाम तक पहुंच गए हृदय से नाम के अधीन है और साढ़े क्या होता है क्योंकि अपने को गुरु नहीं होता पूरा हमें नहीं पता कि नाम मंगना है और कुछ नहीं मंगनी और हृदय से लगेगा फिर That's why next year what we're going to do is we're going to cover all the parts of Gurbani where it talks about Sam, Saad, Bhagat, Brahm, Gyani, Guru. Why are those things important? It's not because we're not, the problem is the word Sant, it got a bad rap. Over there, this Sant is now a guy who walks around with a mala and he goes ahead and tells you to put your down in his photo, everything else. That's not what Gurbani says. Gurbani says, you go ahead and walk around with a mala, you're a cub. I don't know why we don't call everyone who has a mala, we just say you guys are cubs. That's what Gurbani gives the definition. You're cubs from Benares. How do you know the cubs of Benares? They have mala. Okay? You're not a son when you go ahead. You're not a son when you go ahead and just by the fact that you surely go ahead and you have a nice chola and you go ahead and you have a nice mala and you look the part and you tell people you have good chelas, everything else. That doesn't make a son. Gurbani talks about what makes a son. What makes a son over there in Gurbani talks about Anhadvan. Right? It goes through the Kumani, we always read all the goodness of the son. Next year we're going to cover who is a real son. Why are these stages important? They're not, you know what I hate? I hate when people say, what level am I at? It's not a game of level. Oh, I got this. What's next? Okay, that's good. You're excited. But this isn't a thing of levels. Know the definition so you know who to look for a mentor. We can't do anything in this world without mentorship. When it talks about who a son, Saad, Bhagat, Brahm, Gyani, Gurmukh is, what it's saying is, find your mentor. You know what level your mentor is at. Like we talked about earlier. Don't put Gyan into the Torah, you got to put Gyan in the goal. You can be grateful, and you should always remember, Gurbani tells us, who got you on the path, who connected you at those different stages, but you got to focus on the goal. क्योंकि आप आकार में ध्यान देना ज्यादा अब अग्रह हो गया अब आकार देखिए वो थोड़ा पाया पान पाइए मतलब आपको बड़े धार्मिक बन गया पर आप अपने नजर देखना है कि परमात्मा की देखना है परमात्मा
हमारे कहते हैं ना माथे तिलक माला बांधना सुना जाया तो माला बन गया है ना ना मुझे पता कि पांच से बनते नहीं करूँ तो परमात्मा ने दिन मिला है फिर मार के थोड़ा बना परमात्मा से होना कपड़े मिलता हूँ संत तोले का नहीं है संत मान कोई करने थोड़ा बहुत अपन अगला अगला लेवल की ये कोई लेवल वाली गेम थोड़ी है ये तो प्रेम का मार्ग है प्यार में जब लेवल करते हैं लेवल का ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਲੈਵਲ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਅਸਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Like hugs. Person sound of a hug. और महाराज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠਾਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਠਾਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਠਾਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵ ਇਟ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚੜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੇਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਆਪ ਭੜ ਗਿਆ तो इस करके इन आकार तो परे रहना आप आकार का काम नहीं पाया तो है जरूर क्योंकि सब क्या है पर एक यूनिफॉर्म है हम आप घर के लागे हम करता है थोड़ा भाई करना गुरु जड़े ने थोड़ा पाने क्योंकि आप हमारा जो ड्यूटी गए हैं ये सारी ड्यूटी है ये तो बात थोड़ा लागे हम मैं काम से जाऊंगा वो कोई मैकेनिक है थोड़ा पागे मैकेनिक करेंगे वो तो सारा थोड़ा गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो काम क्योंकि साडा ऐसे काम हो रहा है Togo's for somebody, right? Yeah, I'm not going to lie with anyone. That's why everyone else is here. I'm just good to see it. You look good. This brings up an important point, right? Never judge from the outside, right? Over here, we have too many farms about, over here, everything else. We can tell you from personal experience, over here, they just see me, hey, Simran, then they go to a thousand and right? You like it that way, right? It's better. Okay? There's two ways to keep away the monkey out. One way is right? Okay? That's how we know. That car for Satguru, like that, you wear that uniform. It depends on the duty. This is a very good point. This is an excellent point. Uncle G asked excellent question. So this is respect for Satguru. Who come over there for Vana depends on you. I'll give you an example. How come Guru Tegh Bahadur's Vani is included, but yet we don't include Guru Har Gobind, Guru Har Rai? How come? Over there, this is Sant Vani. Guru Tegh Bahadur was Sant Vani. That's how he got the name Tegh Bahadur. But when it came time to fight, did he give his head or did he fight? He took the Marad of Sant. And he said, I'm not going to go the path of Safai this time. Why? Because it's Mawad Hukam. When you get to Avastha, then you know what your duty is for the day. Yesterday, my duty was Virtual. Today, my duty is just like this. That's the difference. But you have to go ahead and, right? You have to understand what your duty is for the day. It's just not dress up. So what happens is this doesn't come from the outward things. When our mind, sometimes when we eat the slash and what we believe, then we put the outside.
तो गुरुमुख ने सवाल पूछा कि अगर जोड़ा नहीं बांधे अपना क्योंकि सब लोग बांध लिया तो उसका नहीं होता। तो गुरुमुख अपना समझा रहे हैं कि ये शांत सिपाही ये ड्यूटी लगी है हमारी जिधर आप गुरुग्रंथ गुरु साहब की बाणी नहीं है अपनी बाणी गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने बहादुर का खिताब Supplying the religion of the Sikh. Sikh means everybody. Guru Granth Sahib, is it just for Sikhs or is it for the whole world? Whole world. But Sant Sapai, is it for everyone or is it for the ones who want to give their man, than, and dhan to the Guru? Mind, body, and swas go up. Khalsa Panth is for the select few. The select few who say, I can hold out my whole life in front of the whole Sangha, and you can go ahead and look at it. And every day, not only will I give my lekha to Waigu, I will give my lekha to Sangha. And over there, you can see if I am living my life according to Guru. This is the duty and the respect of Sant Sapai. If we go ahead and we say, okay, I got Amrit Shastra, that's good enough, then you don't listen to anything in the Gurvani, what kind of respect are we showing Guru? The Sant Sapai is for the select few. That means you are so pure from inside and outside. So what happens is you say, this is like, when people see them, they say, I want my son to be like this. Right? I want my daughter to get married to a person like this. This is the kind of person I want in my family. So then when they see you, they say, this is the way the Guru should be. When they see your behavior, this is a reflection. वो जरा अक्सर सिख वो सारे लिए क्योंकि मन को सिख गया सिख होना है वेद नहीं का केस में समझ के हमारे के मन को देख लिया मनुखा देख सारे मिले और मन भी सारे मिले आत्मा भी सारे एक ही है शरीर भी बंधे तत्व मिले सारी गेम जरा खेल जरा एक ही है पर जो संत सिपाही ड्यूटी ले ये संत सिपाही ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਕਰੀ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ और जो सिख है वो संत मान के चलता इस करके वखरा है ये अपना तिरस्कार नहीं होता और मान लो किसी गुरु में मैं हमारे संग है थोड़ा भी बात है सब कुछ कर लिया और हमारा जो कहते हैं करते हैं और ये तिरस्कार ये तो अपना जमीन हमको बोलना चाहिए तो मतलब ये नहीं कहीं पाना ही नहीं तो वही अपना जीवन ठीक है ना आप बहाना नहीं बनाने साडा ये जीवन खराब है कर रहे नहीं नहीं आप करिए गुरु गल सुनिए थोड़ा थोड़ा हौली हौली अपने मन को बनाइए कि किवें रहना है इससे तो आपका जीवन अच्छा होगा वो मर्जी है संत सिपाही Let's not forget what Guru Gobind Singh's duty was. Guru Gobind Singh's duty was to make a forge that would bring Dharam. Dharam is on its last leg. We covered all 4 legs of Dharam already. We're going to cover it again with Dharam. People forgot the Dharam. Why did they forget the Dharam? Because in Kahal's days, anytime Dharam was discussed, they would cut your head off. Anytime you went ahead and discussed Shabad Guru, they cut your head off. The Guru Gobind Singh Ji's hukam from Waigu was to preserve Dharam. Without Dharam, the game will stop. The moment Dharam is gone, phone stops, everything becomes. और आपका इतिहास का आपको पता ही है वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हुक्म कानपुर में देते कि जाओ जाके धर्म की रक्षा करो तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ और वो जाके वहां कहते ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸਭ ਸਮਾਈ ਦੋ ਜਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ रहना चाहिए उदा करो ता उन्होंने ड्यूटी होर सी तो हर गुरु की हर भगत की हर एक की ड्यूटी अलग अलग तो इस करके अपन को ये गल्लां को समझना जरूरी है ऐसे करके अपन ज्ञान दा ही होगा अपन ये होना चाहिए कि अंदर जीवन कितना दा बाहर दा अपन ज्यादा अपन आकार ध्यान देना पर ये जीवन है ठीक है तो पांच को कम So this is listening. Now let's get back to listening. All of you guys listen so much, Jan. Thank you. Now let's get back to listening to Taba over here in just a second.
listening the siddhas, the spiritual teachers, the heroic warriors, the yogic masters, listening the earth, its support in the Akashi, the listening is the ocean, the lands and the worlds and the netherly underworld. Listening Kalakanandi, Hachi, O Nanak, the devotees are forever in bliss, listening pain and sin are over. A couple things are going to break down. Kal is in charge of everything with what? How many thoughts? 5 thoughts. What is in the 5 thoughts? There is Sarti, Akash, Pavan, right? Okay. There's company of Akash. 5 thoughts. Okay? When we go to Patal, Deep low Patal, you can still hear the Shabbat if your mind is in that avastha. Okay? The thoughts have to stay in Hukam. How do they stay in Hukam? Through? No. The mind, even if they're in those, if it's in Dharti or Kaj, the mind can still listen to go ahead and listen to Nam. So whether you're on a plane, whether you're on the earth, whether you're in a Bora, whether you're underwater, right? You can still go ahead and hear the Nam. The elements have to listen to Nam. Why? So the mind stays in Hukam. Everyone is listening to Nam. Over there, Kal can't touch you when Nam is Parvat. There's a lot of white who's also done and touch you, so long as your mind is listening. It says, O Nanak, the devotees are forever in bliss. What does that mean? It says the bhagats over there are in bliss. Why? Because bhagats listen to Nad. Nad is in Sukmel, from Dharti to Akash. Okay, this is Sukmel. It says listening, pains and sins are erased. Duk and Pa completely go away. You want to get rid of all your Duk? Listen to Nad. You want to get rid of all your pop? Listen to Nam. Where will you find it? Dharti, Akash, where the Bhagat live. You'll be able to, once you hear it, you find it even in Deepo Pata. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾਲ ਚਲੇ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋਕ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਗਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਜੁੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ Now, this is important to understand because if we don't understand it, it will be tough to understand later on. There's a place called Tavo. Okay? Tavo is the place that right now we're at the earth. I'm going to show a diagram in a little bit. But like for example, when you start doing Simran, you get really sleepy, your eyes go like this. Right? And all of a sudden, you can't go to sun, you can't go to sleep all the way and leave the body, or you're getting stuck where you're getting drowsy. That place is trouble where you can't leave Maya. Maya has kind of gravity to its own. In order to go ahead and get a rocket up, you actually need 2 boosters to get it into outer space. The spaceship, 1 booster is to get it up into the sky. The second one is to actually break the Earth's gravitational pull. Double is the place where it would, if you didn't have the second booster, it would just push you down. In the same way, sometimes when we're doing Simran, all of a sudden we're about to leave, we're filling it up, and all of a sudden we get trapped. Then more thoughts and we come right back down. Why does that happen? Because the mind didn't get all the way past double, it still got stuck in double, and we got some. In the earth, the place where we keep all the satellites, that place is double. तो एक तो पहले करके चलिए हम ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਧਵਲ ਕਿਹੜੀ ਧਵਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਆ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੌਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਏ मतलब ना तो ऐसे इतने हैं ना ही सुन चुके हैं वो तबल भी होता होगा वो जरा स्पेस धरती ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾते ਇਹਨੂੰ ਤਬਲ ਕਹਿੰਦੇ Now, it says Sunni Ishvarma and Varma, Indra, right? Shiva, they all sit at the top. Okay? You can follow all people, they praise him. Listening,
the technology of yoga and the secrets of the body. This is actually not what this means, right? It's a sunya jog jagat tante, right? You know what it means? Like, you know, in Sikhism, we give yoga a bad name, right? Because in the Quran, it says, "Tabligh yoga namoi ekata." If you're a yogi, what you do is you can see light wherever you are, right? Because you learn to be white. How do you learn to yoke yourself to white? Or when we go ahead and there is a bull, and we go ahead and yoke the bull or yoke the buffalo, like when we're in India, and what happens is the water buffalo is dragged in the cart apart. Now you are connected to the water buffalo. How? Via the yoke. In the same way, when you yoke yourself to the Shabbat, who are you connected to? Who's dragging you along? It is white. You will learn to yoke yourself to the yoke. It doesn't mean you're one yet. The moment you move your mind away from it, you're unyoked. That's why you have to learn how to samao into it, so you're only one. So by listening, you'll learn how to yoke your mind to white. और क्योंकि योग जो योगा का नाम आता है आपा क्योंकि बहुत से शब्द वर्ड लगे होते हैं ऐसा कहना चाह रहे हैं तो पूछ रहे हैं तो योगा जो ये कर जो योगी वो योगी थोड़ी योगी के स्वभाव मान लीजिए लगे तो ऐसा योगी है योग मार्ग क्या गया है जो परमात्मा ना होता है जहां आपा पहला लेवी बोलदा ना गदा जोड़ता थी और बाल वखरा होवे गदा वखरा होवे बाल थोड़ी जा ना थोड़ी जा सकते हैं आपा तो गदा जोड़ते हैं और बीच बहने हैं फिर बाल किस तरह बनाना ठीक इसी तरह जो मन एक तो शब्द वखरा होता है फिर गया है ऐसे करके आपा जो होते बड़ा जबरदस्त बात नाम स्मोना स्मोना जाना कि फिर वो बार-बार ना होए थे बोलने पानी में वो जो गया वाले तारा कहते कलनी जो ना होए एक दृष्टि का सब जाने दूसरी सही है क्योंकि वो जो दृष्टि संग का भाई मुझे देखा Okay. This is listing the Shastras and the similarities of the Veds. O Nanak, the devotees are forever in bliss, listening pain and are erased. What else is there? Now we said before, you can't have Jivan judge to what is farther. What needs to be farther? Okay, it says listening, truth, contentment, and spiritual wisdom are found. Can you have any wisdom without Nam? According to Gurbani. So if you read Gurbani and you've never heard Nam, can you really understand it? Yes or no? Okay, listening. What do you get? It's like going to Atsatya. It's like going to the 68 places of pilgrimage. Listening, reading, and reciting honors obtained. That means when you read the Bani, you will say someone understands it. When they speak it, you'll get a nun just by them speaking. Why? Because they're connected to God. Okay? Listening. Your mind will come into sage. You know what will happen? You'll have full jnana. 100% Nanak. The devotees are listening, pain, and sitting. और आपा पहले जो जाती थी तो थोड़ी जाएगी हमारे सोए साथ संतोष के तो ऊपर नाम ना जुड़ते हैं वो तो साढ़े साथ संतोष होता है वो तो पहला नहीं होता पर नाम ना नहीं जुड़े कि साढ़े ना संतोष है लगो कि साढ़े कुछ ना कुछ सही जाए तो वो जाए तो मैंने सुने आठ सौ जाए ना तो नाम सुनना शुरू कर दे तो 18 टिकट करते हैं लोग ऐसा सौखा करता है सुने पढ़ पावे मान जेड़ा गुरुमुख पहुंचा नाम तो वो ताबे तो बैठ के महाराज जी बाणी सुनाता पाऊं जापान वो सारा हो जाता तो मैंने मान मिला पिताजी उसने बाणी पढ़ी थी समझ जब तक कोई बाणी पढ़ रहा है तो समझ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है फिर तो मान थोड़ी मिलेगा फिर मैंने सुने लागे सहज थे जब सुनेगा ना फिर तेरे ध्यान जाएगा जब सुनेगा तो ये फिर बारे नाम पढ़ता सदा In Gurbani, it says you keep on reading, you never got saved. Over here, it says if you listen to Nav, you listen to Shabbat, you read, and you'll get saved. See the difference? और गुरबाणी कहती है पढ़ के गड्डियां लग रहा है पावे इधर जाने जितना मर्जी ज्ञान को खत्म कर और इतने बार कहते सुन ला क्योंकि नाम ने कुछ सारा खेल है सुन ला तो तेरा ध्यान रखना आप जितना मर्जी पढ़े जाइए अपना ध्यान रखना क्योंकि जितना पढ़े आप लोग विचार करने लगेंगे कि आप पढ़े मैं ऐसा पढ़े विचार तो इकट्ठा कर ले ऐसे तो विचार खत्म कर तरीका सुनना
Now, it says listening dive deep into the ocean of virtue. Listening, the chakras, religious scholars, spiritual teachers, and emperors. Listening, even the blind find the unreachable becomes within your grasp. Oh, Nanak, the devotees of Brahma. Let's just take the gist of everything. Okay? When you go ahead and you're all blind, if we're all blind to white, but we heard his voice, and we are blind to white, if we heard it, even if it was a little bit, would we go ahead and follow it to find it? Yes. What we think is unreachable is reachable once we hear what? That's what that means. If you're blind to Nam, pray to white. Say, pull the parka. Make me see you. How? By first listening. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਅੰਧੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪੜਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਦੀ ਲਾਇ ਪਾ ਦਿਓ कृपा करके पता रहा था सारा काम किसको होना छोड़ दिया. So let's go ahead. Let's put the theory into practical. What we're going to do is, who's jumping when we go ahead and jump through a mantra? Who is it? Waheguru is jumping. Let's listen to Waheguru while we jump. Okay? Let's put all our dhyan and Guru mantra into our ears so that we can hear it. Okay, let's do it.
Guru, Why, 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 Guru, Why,
Okay. Did everyone listen? Sometimes there's a challenge in listening, but when we're in Sangat, it's easier. You make one thought, it's easier. That's why the Shabbat is one sound. If no one likes to work hard, really likes to work hard. The only guy I ever met. Genuinely, I only met one guy who ever told me, I really, really want to work hard. Right? My father taught me when I was young to learn how to work the easy way. It means that because bricklayers work hard, doctors work hard. Because one makes more money working hard. Right? Because there's one easier job, one harder job. Right? Go ahead, find that path that goes ahead and gets you the most return. When we come to Sangat, we're going to work hard. Some people want to do bhakti all by themselves in their house. And there's a time for that, but there's a time to also be in Sangat where you can learn to take more. और गुरु का सवाल पूछा आप करना चाहते हैं उदम करना चाहते हैं तो लोग कहना क्या बाकी क्या आप करना तो चाहते हैं वो पता संगत जाके वो साथ को हो ही जाता है तो क्या आप सारे जानते हैं आप चले आप कर दो किसी को और संगत आके आप कर दिया सारे क्योंकि क्या होगा सारी संगत कर रही है कुछ समय होगा जो कि आप कर ले भले साथ में समय आएगा पर संगत कर दीजिए और आप जो आप तो नहीं जानते क्या मान पर जाए और देना एक और फिर जितना संगतों पर गया बहुत विचार होंगे वहाँ पर विचार शुरू करते हैं और एक का दूसरा विचार होंगे तो ये संगत विचार Now what happens is, when we go ahead and we want to stay in Jnana, that's the one we want to listen. That's the time when we want to go to sun. That's the time to do outside of Sangat. I heard one people was telling me, people come on Fridays, they bring their pillows, their blankets, and then they lie down on the floor. This is the place to nap. This is not the time to take a nap. It's go right into Bodhisattva. It's the time to jump. When you're in Sangat, you're supposed to jump until whoever is doing the table for the sun says, okay, now we can go to sun, then it's several, then it's several. Okay? But why is it so important to jump? Because the hardest thing to do in this world is to do what? Jump. Why? Because the one thing Kala is more scared of than anything else is someone who jumps now. Why? Because they're going to get out of the तो महात्मा से कौन से लेकिन नहीं करनी चाहिए तो प्रसंग जाने हैं वो तो आप जाग के हाँ वो अलग गल है जो कुछ नहीं करा रहे लोगों को कहीं जो आपको वो सारे क्योंकि अपन लगना पसंद नहीं है जो दुर्मंत्र कर रहे होंगे अपन सीधा पहुंचा के जाके देख तो समा होगा तो जरा पता जाना हो अपन सारे ऐसे बड़ी चीज़ दुर्मंत्र जाग के जोश में किया वो रात ही जाके अपन और जाके वो रात को जाना संगत में जब दुर्मंत्र बेनती करते हैं तो अपन जाग के क्योंकि दो घंटे सभा होता है वो तो ठीक है जैसे आप काम से जाते हो काम से जाते हो नहीं है तो अगले घंटे काम करना है तो हमारे ऐसे तरह आप हमारा देख रहे हैं उसको देख रहे हैं ना दुल्हन लपड़ेंगे तो जब दुल्हन सुखी रहेगी तो व्याह कैसा रहेगा पहले तो यहाँ पे आ जाएगी करना कि पूरी जो रिश्ता हो उसकी मर्जी ना रिश्ता कर नहीं अपन जाग के सिमरन करना ताकि जरा सारा मान ना विचार तो रहते हुए फिर सोच जावा क्योंकि विचारा तो बगैर सोच जावांगे फिर सोच पै सके तो जब विचार लगे सोच करते वापस So you have to know when it's appropriate and what kind of behavior is important. Okay. Why do we work so hard? Because we know we're going to die. Right? Anyone here going to live forever? Who's going to die? I don't know. Right? So what happens is the minute that we put in, the kamai that we put in, is for what? For an investment for the future. You know, a lot of times I'm the youngest. My dad had me when he was very old. He was in his early 40s. Pretty old by those days, right? And sometimes I would say, Dad, why did you retire early? You have more than enough. He goes, no, son. He goes, I'm making it for you guys. Right? He goes, I'm working hard because I want to leave something more extra for you guys. Right? He goes, make your life a little more comfortable. Because there are other factors too, the social factors, other things. Because I'm really working, because I think of myself, I'm working for my kids.
And it's very kind of him to say, okay, I want to leave something for you guys. But does it do him any good? In the end of the day, whatever he left for us, or whatever he'll leave for us, it's not going to do any good to him. The time to work hard is now. The kamai, the minute of Shabbat food is now. Why? Because it's the only thing we're going to take. So we do everything to do something in this world. What do we do for next? Right? Once you go ahead and you have a comfortable enough life, it's okay. Now it's my duty. Go ahead and, one for look at a baby. My kids are so small. I can't do similar. I got a sickness. I can't do similar. Well, her duty right now is to take care of the kids. The duty is to make herself better and also do something. Right? Whatever little you can do, wife knows how busy you are. But don't make that an excuse not to do the minute of the show. तो आप कई बार अपने परिवार में देखते हैं कि लोग बच्चे छोटे होते हैं, फिर आप कहते हैं सारे बच्चे छोटे बच्चे नहीं, तो माता को पता ही होने से भेजे छोटे बच्चे माता की ड्यूटी में बच्चे नहीं पढ़ते, ना सिमरन में छोड़, इन लोगों को पढ़ाना नहीं पढ़ाना क्योंकि बच्चा 5-10 मैं देखिए बच्चा 19 साल का तो माता जी ने कहा कि सिमरन में रहकर भी प्रैक्टिस में रहा हूँ 19 साल का मुंडा अपना बैठा तो ना वो हमें 90 साल का हो जाना हमें क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा मिला तो क्या है मेरे मिला है ये ही पढ़ने से कब पाई आवे अंत ना पंजा जाई अपन सारे हाथ खड़े करके मार जाए तुझे पता ही नहीं पढ़ते क्यों हुन समय अपना को हुन मिला ये हुन सोची नहीं हुन सोची आ गई So, Ronnie tells us those who work on who do the minute of now. These are the ones so we can recognize who does minute of now. The Ronnie's always laying out the Nishan. First, you have to understand what Nam is. That's why we did this for so long. We didn't know what Maya was, right? For 2 years, we've been going through everything. Okay? Now look, it says, those who work on Nam, they cannot be described. Okay? They cannot be bound by words. They have an intuitive awareness and intellect that you can't understand. They can correlate things that otherwise seem obvious once they do it. You were never able to piece the pieces together. They know about other worlds and realms. They never get struck across the face. They don't have to go to the messenger of death. They depart with honor and fame. They don't follow empty religious rituals. They are bound by dharma. That means they're bound by their duty. Okay? They find the door of liberation. Who do the man of the Shabbat. They will find liberation, the door for it. And redeem their family. Want to do something? That you are blind to see, it won't be manifest now. Okay? This Nam, people who did manifest Nam, paired with the seats of the group. That means other group Sikhs, right? Anyone who belongs to the group, they'll be saved. Why? We'll sit in the sun and go ahead and share with you what's up in